जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। Nothing is mine, all is yours, all is yours. When I retired from the army, I had settled down in Panchkula and making a house. And while making a house, I was financially problems, health problems. My son couldn't hear. ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा, तेरा तेरा. 3-4 days after that, I get a message from Guruji. Never heard him, never saw him. I was rather surprised as from who Guruji is and how is he sending the message. The message was that he wants to see me. I avoided it to begin with because I had gone to so many saints and Sant Mahatmas, but I wasn't satisfied. Ultimately, I went to Guruji. As a matter of fact, when my son was 3 years old, he lost his hearing. I tried all systems of medicines, homeopathy, allopathy, Unani, Siddh. Nothing happened. To the extent somebody also told me that the ghosts, evil spirits, they are very powerful and they have the cure. I went and visited those people, the ghosts and all. I mean, you can't see them, but you can hear them. They promised everything will be all right. Nothing was all right. So as I mentioned earlier, when I retired and settled in Panchkula, मैं अरदास की थी वाहिगुरु कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा. I get a message from Guruji that he wants to meet me. I avoided it, but then when I kept on getting the messages, I went and met him. The first time he met me was in the golf club reception hall. When I looked at him, he was like a model, very beautifully dressed, very handsome. कोई माला नहीं पाई हुई, कोई मत्थे तो टिक्का नहीं लगा हुआ. जब मैं मत्था टेकिया, मैनू कहंदे मैनू मिलिया कर. I was really impressed by him. मैनू खिंच पै गई उसदे वास्ते. He was staying with Jan Ahuja in Sector 2, Panchkula. I was staying in Sector 4, Panchkula. Every evening we used to visit him. For 9-10 days, basi matha tekna, but he never spoke to me, never said anything. I was sitting like the other Sangat was sitting. After 10 days, he calls me and my wife into his bedroom. Panch couple hote hor bhi baithe sige, and कहंदे तेरे काके ने सुनदा नहीं. मैं कहा गुरुजी नहीं. And before that, then he says, he told my father's name, my Dadaji's name. He told my wife that you have got so many silk sarees. No, that you have got 46 sarees. My wife said, yes, that I remember, because my wife has always been very fond of South Indian silk sarees. फिर गुरु जी कहते तेरे को सोना भी बहुत है. मेरी वाइफ कहती जी सोना भी बहुत हैगा, पर ये मैनू नहीं पता किन्ने तोले हैगे. कहते तेरे घर वाले ने चंडीगढ़ कोठी 4 कनाल की कोठी सी, वो भी बेची सी. उन्होंने इन्ना पैसा मिले. मैं वाइफ नू पूरा पैसा नहीं दसिया, मैं घट दसिया. Whereas Guruji told her the exact amount. I was rather surprised. The wife कहती तू जिंदगी you have never been unfaithful to me. This is the first time you have been unfaithful. I kept quiet about it. जब मैं घर गया, I don't know, in the cupboard I had kept कि total कितना आया सीगा. How that पर्ची came to her cupboard is a mystery to me. And it was the exact figure what Guruji had mentioned to me and my wife. I told my wife, मैं कहते देखो जी, for ladies diamonds are forever,
ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। That is why I said, I told you the less amount. I was amazed that how a guru knew everything. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ faith ਆ ਗਿਆ ਕਿ here is a saint who knows everything. ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ ਦੋਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਲਿਆਣ। I kept on putting the almond oil in his ears. Nothing happened. On the 10th night, he started getting earache. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੰਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਨ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। It's the other way around. Anyway, next day I went to a doctor. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੇਨ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, he said, why have you been putting this oil? You're a senior officer of the Indian Army. ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਤੇਲ ਪਾਉਂਗੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, as he has got the problem, he can't hear, so how does it matter ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਟੋਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਾ ਕਿ he's hard of hearing. Anyway, they carried, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਟੋਮੈਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ। ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ। Next day, small room, my son sat on a stool. ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ ਕੋਲੇ। Just so ਉਹਨੇ headphones ਪਾਏ and a beep which you cannot hear outside. He fell down from the stool. I thought he slipped. Again, he got up and sat on the stool. फिर headphones ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਏ. Again, he fell down. This time I told him, son, what happened? I mean, he could read, lip reading ਕਰਦਾ ਸੀ, lip reading. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਿਆ। The noise was very loud. He heard this loud noise after a quarter of a century. 25 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ, and it was 20% hearing restored. Same evening मैं गुरु जी को ले गया। गुरु जी कहते फिर ठीक हो गया? मैं कहा हाँ जी। As I know, before that, when I was coming from the hospital going to the house, I was driving the car and he got out of the car earlier. When it was a distance of about 10 feet in front of me, I called out his name and he said, yes, Papa. That was a confirmation to me that his hearing has been restored. Earlier I thought Guruji ne maine hypnotize karta hu, that's why I'm seeing positive visions, but no, he heard my voice and yes, Papa. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, 20% hearing restored. ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਮਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਕੇ ਭਗਤੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਰੱਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ God is Guru and Guru is God. Thereafter I had ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਜੋ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। Remember when you speak to Guruji mentally, it is not the words which come out from your mouth. Your soul must speak. जोत जोत मिलनी चाहिए है, then the message is conveyed. यानी कि जो भी गल करनी है, it you should be from your भावना, दिल दे विचों, not as a ritual, not as a formality. जब ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦਿੱਤੇ थे. He took out from his feet and gave it to my wife. ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ, they will be with you forever. The second incident, what happened was, every year I used to go to the club for New Year Day along with my wife. And this time I told my friends that I will not be coming to the club. I will be going to somewhere in Delhi. ਕਹਿੰਦੇ ਯਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਡਾਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕਬਾਬ ਖਾਵਾਂਗੇ at midnight. We'll wish each other a very happy new year. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਆ ਗਿਆ।
Next morning when we got up, my wife was making a cup of tea. ਉਹਨੇ teaspoon ਪਾਇਆ ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹ ਦੀ ਪੱਤੀ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾਤੀ, and guess what she saw? The tea leaf powder on the concave side of the spoon. There was an appearance of cobra snake. मेरी wife ने फिर दूसरा चम्मच पाया, again the same image of a cobra snake. She comes and tells me से मैं ना हुई है, मैं कहता तू ही बहमच पै गई झूठी, I don't believe in these things. मैं कहा ठीक है मैं आऊंगा. So I again went to the kitchen with her. This time I did not take a tablespoon. I did not take a teaspoon. I took a tablespoon, which is bigger. फिर मैं चाय दी पत्ती पाई, फिर सीटी, चाय दी पत्ती गई, पाउडर सीगा. It gave the hood of a cobra snake. That was the confirmation to me, because Guruji is the Bhagat of Lord Shiva. I told my wife, this is a message for me and you, that we cannot celebrate the New Year with our friends. Guruji wants us to be with him tonight for the New Year Eve. ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰਜੀ ਕੋਲ on the New Year Eve. ਡਾਂਸ ਟੂੰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਲੂਨ ਬਲਾਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ. All the people were dancing. Me and my wife, we were not dancing. ਗੁਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਆਂਟੀ ਡਾਂਸ ਕਰ. ਤੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਦੁਖਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਦੁਖ ਰਿਹਾ. This will further create problems for me. Again he tells in a slightly loud tone to me and my wife, get karo dance karo utho. We got slightly scared कि गुरु जी हम गुस्से हो रहे हैं. We came on the dancing floor. This was just about 5 minutes before the New Year. करते रह गए 5 मिनट डांस. ते रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟਾਂ ਫਿਰ ਆਈਆਂ. Everybody was wishing a happy new year to each other. My wife also was hugging everybody and wishing happy new year. And she realized that pain of 25 years disappeared just with that one dance which Guruji had ordered. मैं कर गया. She was almost every time on Brufenes. And I threw the Brufenes into the lawn and gave a very ceremonial farewell to the Brufen tablets. Kyunki Guruji di kirpa hai ki hereafter medicines has nothing to do with the pain. Once a friend of mine, kehanda yaar you are there is zameen hai and I would like to grow roses. And I like to export roses to Europe, which he has been doing earlier. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ. ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਗਏ ਤੇ my music was on, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ. ਕਹਿੰਦਾ what is this? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ. ਕਹਿੰਦਾ look, is this your age? Is this my age? ਛੱਡ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. play Michael Jackson, play Madonna. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ, ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ. So I started talking about Guruji and his miracles. Kenda, I don't believe what you're talking about your Guru. You're telling lies. Unless I see a miracle with my own eyes, I will not believe it. On the highway when we were driving short of Panipat, a truck came from behind and hit my car. My car turned over, hit the divider between on the road of Panipat and Ambala road. सजे पासे गई, accident हो गया. In the meantime, some people came and pulled us out. वो भी बाहर गिर गया, मैं भी बाहर गिर गया, वो भी बेहोश हो गया, मैं भी बेहोश हो गया. Anyway, I came to my consciousness earlier. कोई सट नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ. But of course, I was in pain. My friend, he was lying over there. मैं क्या मरता ना गया. Anyway, 5-6 मिनट के बाद लोगों ने पानी पुनी पाया. He also came back to life. And the same night we spent over there. And next day I came back. And my friend says, today I believe your Guru is God. I said, now what proof do I have to give for that? Can the fact कि मैं भी बच गया, तू भी बच गई, कार चूर हो गई, it goes to prove beyond doubt that your Guru is God. See how Guruji created a situation
to bring a faith in a person who never believed God. कुछ दिन बाद मैं भी सोचता मैं तो गुरु जी को ही जानना सीखा भक्ति करता है पूजा करना कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करता मेरे नाल एक्सीडेंट क्यों हो गया then somebody told me कि जदों इंसान को कोई दुख और तकलीफ होनी होती है and if the God wants to minimize the trouble या दुख खत्म करना चाहता है he puts you through agony. It can be a serious disease where you have बच गया. It could be an accident. It could be a financial liability. So he says तेरे गुरुजी ने तेरे ऊपर इस किस्से मेर की थी तेरा एक्सीडेंट हो गया तेरे कई युगों के ट्रबल जो तू इकट्ठे किए हुए सी वो खत्म हो गए सही है गुरु कोई लेना नहीं कोई देना नहीं कुछ लेना नहीं but always looking after his sangat all the love and all the affection. Guruji अपनी जड़ी बुरे कर्म है उन ठीक वास्ते गुरुजी कर्म he should take it on himself. He also used to go through pain and agony because he had taken somebody else's problems, but he ensured that his disciple was happy, safe. There are a number of miracles which has happened with me because I was with Guruji for a long time. As a matter of fact, I must have done about 150 satsangs in Empire State, Bada Mandir, and various places. Guruji menu kende sige tu I used to do because Guruji used to tell me. I never got up only Guruji kende si. मैं कहा गुरुजी मैं कितने सारे सत्संग कहते लोग भी हुई है जगह भी हुई है कहते जा तेरा गुरु तेनू कहता है सत्संग कर तो तेरा की बिगड़ता है मैं कहा गुरुजी मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता कहता फिर जो भी मैं तेन सत्संग तू कर दिया जाकर एज अ मैटर ऑफ गुरुजी मैनू कहते सी कि जदों भी तू आंदा है मेरे कोले तू कोई एक नवा चेला लिया कर नवा बंदा लिया कर उन्होंने ਆਪਾਂ ठीक रास्ते च पावांगे I used to tell a number of people आओ कई आ जाते सीगे कई नहीं आते then I was told कि जेड़ा सत्संग करता है उन्होंने गुरु की तरफ ब्लेसिंग्स मिलती है जेड़ा उन्होंने होर बंदे आ भी जाते हैगे नवे होन या पुराने होन उन्होंने ऊपर भी ब्लेसिंग्स हो जाती है see Guruji's way of calling people into the world of spirituality to ensure कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए then after मैं एक दिन होते before I was to go to the hospital मैं मेरा heart beat very fast हो जाती सी all medicines had failed ultimately I got myself examined and came to Delhi for a checkup and the doctor said there is no other way out your heart has to be operated upon मैं कहा before I go for the operation मैं कहा गुरुजी को मैं blessings ले आना कहा था कि पता मैं गुरुजी को एम्पायर स्टेट गया I came to ला लिया कि कोई संगत नहीं होगी and I will talk in confidence 4-5 बंदे बैठे थे एम्पायर स्टेट मैं भी बैठ गया after some time गुरुजी संगत का बंदा जो गुरुजी को बैठा सीगा he comes and tells me 5-6 बंदे बैठे थे कहते तूर अंकल मैं कहा जी मैं ही तूर अंकल कहते गुरुजी कहते nothing is wrong with your heart I said please tell my Guruji that all medical checkup has been done and something is wrong with my heart and I'm going to for an operation tomorrow 10-15 मिनट बाद काफी लोग हॉल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ गुरुजी आए बैठे लोगों ने मत्था टेकिया गुरुजी प्रसाद बनने लगे उस दिन उन्होंने प्रसाद सीगा समोसा मैं कहा हाँ यार मैं तो मर गया मैं कहा मैं तो गुरुजी ब्लेसिंग्स लेना आया सीगा प्रसाद लेना आया सीगा and here is a samosa big huge once oily spicy मैं कहा जिसे मारना होता है समोसा ही दो हार्ट पेशेंट मैं कहा I must avoid it तो मैं भी फिर अवॉइड करता रहा and ultimately I saw कि 2-3 बंदे ज्यादा गुरुजी को गए the basket was empty बिल्कुल खाली you could see it there was nothing in it I could also see it
कुछ नहीं सी। मैं कहा लकी आया कि जब मेरी वारी आई तो समोसे खत्म, हुण गुरु जी दी ब्लैसिंग्स भी हो जाएंगे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦ ਮੈਂ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ, ਹੈਵਨ ਅਲੋਨ ਨੋਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ, ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਚੱਕਾ, ਚੋਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਹਵਾ ਚ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ, ਔਰ ਸਮੋਸੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਆ ਖਾ, ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਹਾਰਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਗਿਆ, मैं खा ले। कुछ देर बाद फिर मैंने बुलाते, अंकल तू आल। He again called me and खब्बे, this time he picked up his left hand into the हवा दे विच 2 समोसे होर आ गए जी। कहंदे खा। How can you eat so many samosas? और दिल भी नहीं करता सीगा। पर जब मैं समोसे लेके बैठन गया, I got a thought कि गुरु जी कहते होंगे सीगे, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਖਾਏਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਉਹ ਮਠਾਈ, ਉਹ ਦਵਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਮਠਾਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ I had no choice, ਮੈਂ ਖਾ ਲਿਆ। ਜਦ ਰਾਤ 12 ਸਵਾ 12 ਵਜੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ, ਹਾਰਟ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਲਸ ਤਾਂ ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਵਰ ਸੋ ਮਚ। ਤੂੰ ਕੱਲ ਜਾਏਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ, ਤੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਹਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਥੋੜਾ ਹੁਕਮ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਜੇ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਾ ਕਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਗੁੱਡ ਨਾ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ECG ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਬਹੁਤ ਐਂਗਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ECG ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇ ਗੋਟ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ BP ਲਈ, ਨੋਟ ECG, BP। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BP ਮੇਰੀ ਲਈ, ठीक। फिर उन्होंने मेरी ECG ली एंड वो भी ठीक नहीं, they won't tell me the results, they just won't tell me the results। कहते ये तो डॉक्टर साहब भी बताओगे। मैं कहा ठीक है। फिर मैनू कहते उदों सॉरी one thing I forgot to tell you, a day एक पहला ही 15-20 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦਬਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ then he called me, he was pressing ਗੁਰੂ ਜੀ's right leg ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਦਬਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੂੰ ਵਹਿਮਚ ਨਾ ਕਰ, ਚਲੋ ਜੇ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਹਰੀਓਮ ਕਹਦੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਹਰੀਓਮ ਵੱਡਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। This time he looks at me, he is asking a question कि गुरु जी कदे कदे मेरी अख भी फड़कन लग जाती है, ये गल ठीक नहीं होती। This time गुरु जी is looking at me in a very deliberate manner। कहते रब दा शुक्र कर कि तेरी अख फड़कन लगी, because something was physically wrong with your body। जिस तरह तेरी अख फड़कन लगी, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਬੋਡੀ ਅੰਦਰ, it has been cured by the grace of your guru, by the grace of the almighty। क्या कमाल है, what
Lovely thing I heard. So when I had to go for my checkup, as I told you, मेरे BP वगैरह ले लिया, ECG का result ही नहीं दसिया. कहते now we'll have to carry out the echo. जब वो every time is carrying out tests, मैंने शक बनता रहा कि मैं एक टेस्ट खत्म करूँ फिर if I'm already why is carrying me for another test. जब मैं गया echo room ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਪਾਤਾ 17 ਲਾਪੀਆਂ echo ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ. The doctor had come. In the meantime, Charles coat for young doctors, chitta coat paake wo bhi aa gaye. मैं कहा, my God, something must be wrong with my heart, and the doctor wants to teach his students. ये देखो ये की होना. Good enough. मेरी वाइफ बाहर बैठी बेंच पे प्रेइंग कि इन्हीं दी हुई आया नहीं. He went away. घंटे बाद मैंने डॉक्टर ने बुलाया. You are to house number so and so, file there was enough, phone number so and so. Yani he wanted to confirm me that I am talking to the right patient. मैं क्या हाँ जी. कहते कर्नल बस क्या के चुप. कहते हूँ तेरा TMT होएगा. लो जी मैं TMT थी उस दिन नहीं गया, अगले दिन मैंने TMT बस बताया. Next day I went for a TMT. I was on the machine, चल रहा पड़ता. After some time machine बंद हो गई. मैं क्या हाँ सब कुछ ठीक है. कहते ये तो डॉक्टर साहब भी तो समय लो पाता हो शक में तो मार दे. फिर some time हाँ डॉक्टर आया again. Can I have examined you thoroughly? All the steps that are supposed to be taken to find out the patient, right from the beginning to the end, I had done everything. But let me tell you, you are not 100% fit. A pause of 3-4 seconds. He looks into me and says, Colonel, you are 200% fit. Kya swad, kya mauj. कोई दिल दी धड़कन नहीं, कुछ नहीं, खुशियां खुशियां जो मांगे ठाकुर से सोई सोई हुई. Then I came to Guruji. Guruji कहते हुआ तेरे टेस्ट ऊपर नीचे आगे पीछे. मैं कहा हाँ जी. ये कहते डॉक्टर. मैं कही डॉक्टर कहते I'm 200% fit. कहते देखा फिर तेरे गुरु. Again he repeats to me, हूँ तो भगती पै जा, कुछ शक बैम सुना रहा है, टूट के पै जा तेरी भगती. Guruji, thank you ever so much. For me, you are God. Your Guru and second, yeah, God is Guru and Guru is God. देखो मेरी गुरु दी कृपा. दोस्तों मैंने पहले भी कहते सी तू जाएगा ऑपरेशन वास्ते तेरी छाती फाड़ के रुपये 5 लाख उन्हें कड़ भी लेने. देख बैठे बैठे तू ठीक हो गया. I say so. Thank you, Guruji, ever so much. My sister's son, he was in the IIT Kharagpur. वो कर आया तो बुखार हो गया तो टेम्परेचर ना गिरे. So she sent the blood samples to AIMS, one laboratory over there in Tata Memorial Hospital, Bombay. All confirmed that he has got leukemia, a blood cancer. My sister is also doctor. Oh, एक आधे ਵਿੱਚ बैठी. ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ 7 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲਈ. ਪੁੰਜੇ ਬੈਠੀ and on the ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ Guruji ਜੀ ਦੀ photograph and Guru Nanak ਦੀ photograph. Looking and she spoke mentally to them. 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ. Whenever I used to come from Chandigarh, Panchkula to Delhi, मैं घर नहीं किसी ਜਾਂਦਾ ਸੀ वो गेस्ट हाउस कितने नहीं मैं ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ मैं गुरु जी को जाना. उस दिन भी मैं शाम ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ गुरु जी को करीब 6-6:30 ਵਜੇ. ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ. ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ. मैं क्या खुशी होनी है जी. So same night आया रहेगा. I said this is what Guruji has told me कि तेरी भैन खुश है. मैं कहता गुरुजी खुश होनी है. She started crying.
मैं कि गल की हुई, शी वोंट आंसर। जिस तरह मैं होर गल करना होर उच्चा रोन निकले। एनीवे आई अगेन स्पोक टू नेक्स्ट वन, किसी को गुरु जी को जा रहे हैं, मैं हाँ कहना मैनू भी ले चल, बिकॉज हर हस्बैंड ऑन देयर ही इट स्टेशन। मैं कहा ठीक है, मैं ले गया, गुरु जी ने मत्था टेकिया, उन्हें मत्था टेकिया। गुरु जी मैनू कहंदे एदी मुंडे दी जिहड़ी कैंसर सी ना, मैं बीमारी कन्वर्ट करके छोटी बीमारी कर दी। हाउ नाइस ऑफ गुरु। जिस तरह गुरु जी मतलब बाहर आया था, टोल्ड माई सिस्टर, कहंदी हाँ, मैं दोबारा टेस्ट करवाया फ्रॉम द सेम पीपल, एंड एज मैं फिर से रेजिडेंट मैं तक टेस्ट नहीं कराया, बीमारी हैगी, बेशक गुरु जी ने दसता दिता सीगा, पर मेरे रेजिडेंट डॉक्टर कहंदा आंटी तुसी हमेशा वरीड हो, तुसी टेस्ट दोबारा ही करवा लो। कहंदे सेम उधर दोबारा स्लाइड लई, सेम लेबोरेटरीज, and they confirmed that he's not a patient of cancer, blood cancer, any cancer. It's 100% clear. एक कौन कर सकता है, एक रब ही कर सकता है, and God is Guru, Guru is God. एक दिन मैंने गुरु जी कहंदे आ रखड़ी आई हुई है, मैं कहा ऐ कर आ 22 सेक्टर दे विच उत्थे कई बंदे रखड़ियां बेचदियां रेहड़ी दे उपर, तू एक बंदे नूं मिली, तैनूं सब कुछ दसूगा। I not understood the purpose. जी रखड़ी लेनी तो भैन जाके ले गई, how do I go and get the rupees? Anyway, this was Guruji's order. I went. मैं कहा गुरुजी नो, क्यों तेन उत्थे जाके अपने आप ही पता लग जाएगा। गुड ना, वो रेडियां रखड़ी बेचियां सीगियां, and at one particular ready, the large number of girls were standing there. मैं चोरी आंख ना खब्बे सजे रेडी देखा, and they were Guruji's photograph on the ready. It was a confirmation to me that Guruji must be referring to this man. Now how to get inside? Inniya kudiyan bheed lagi, it doesn't look nice for a man to barge into the girls. Then I asked one of the girls, मैं कहा इत्थे इन्नियां कुड़ियां हैगियां, अगे भी रेडियां खड़ियां हैं, उत्थे कुड़ियां घट हैगियां, तुसीं उत्थे चल जाओ, why wasting your time unnecessarily? कहंदी अंकल इत्थों जिहड़ा कई सालां तो जिहड़ा इस रेड़ी चों रखड़ी लैंदा है ना, वो पाई पैन दे जिहड़े रिश्ते बिगड़े हुंदे है ना, वो भी ठीक हो जाते हैं। मैं कहा व्हाट? कहंदे हाँ अंकल, मैं नहीं, मेरी दूजियां सहेलियां ने, उन्होंने भी कई गल हुंदी सीगी, ते वो भी इत्थे आउंदियां सीगियां, उन्हां सारियां दे जिन्ने बड़े खराब रिलेशंस बिटवीन द ब्रदर एंड सिस्टर्स, सारियां दे रिश्ते ठीक हो गए, एंड दे आर ऑल वेरी हैप्पी। देन आई स्पोक टू दिस वेंडर, मैं कहा तू गुरु जी तो भगत है? कहना हाँ जी। मैं कहा मैं तेन मिलना चाहता, काफी टाइम हो गया, खाली हो गई रेड़ी, there was no crowd. हाँ, there was some crowd was there. उन्हें अपना नंबर 2 को खड़ा करते रहे थे, and he came and spoke to me. मैं कहा you know गुरु जी? कहना हाँ जी। मैं कहना तुसी भी जानते हो? मैं कहा हाँ जी, मैं तस्वीर देख के, मैं कहा तो गुरु जी ने मैंने कैसे इत्थे आउण वास्ते? कहंदे जी साडी मेरे ऊपर इन्नी कृपा हुई कि दस नहीं सकदा। कहंदे जी कुछ समय पहला कहंदा जी मेरे सिर दे विच ट्यूमर हो गया सीगा, मैं पेजा चंडीगढ़ गया, ट्यूमर सीगा, उन्होंने कढ़ता, मैं ठीक हो गया। फिर कहता जो ही सिर दर्द, अखा च विजन भी खराब होने लगी, कहता फिर मैं गया, फिर वो ट्यूमर किया, हुण कहंदे तेरे ट्यूमर तो हो गया कैंसर। कहंदा जी फिर मैं बेहोश जाते, आई वाज लाइक ए वेजिटेबल। फिर डॉक्टर ने मां नूं कहता कि in cancer where there is no hope, he can pop off any moment. तो दी मां डॉक्टर कहंदी जी मेरा बेटा मरेगा, थोड़े हस्पताल च मरेगा, मैं तो तुम लैसी ठीक करने वास्ते तुसी मैंने उल्टी खबर सुना रहे हो कि मैं ले गई। So she took her unconscious child back to the home. उत्थे वो
ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਹੀ ਵੈਂਟ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਪ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਂ ਕਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ 10 ਛਿਲਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁਬੋ ਦੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਡੁਬੋ ਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਛਿਲਕੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਛਿਲਕੇ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦੇ। Good enough. Few days she did that. He came back to his senses. Looking very healthy, happy, physical movements 100%, ਅੱਖਾਂ vision ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ। He looked like a very normal person. ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦਾ MRI ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਕੈਨ। ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, and believe it, there was no tumor whatsoever. Doctor had left him with the tumor because there was, even they operated upon him, it was an agony since there's no cure. But here the tumor disappeared. ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਈ। The tumor just melted like a butter. These are the words from this vendor. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇ, ਛੋਟੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਵੇਚ ਬੋਝ ਕੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਪ ਵੀ ਬੜਾ ਲੇਬਰ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। So he started questioning me, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇ? So I told him how I met him. ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ। I met Guruji in 96. I became so fond of him. ਜਦ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, I'm being honest, I used to feel very low, morale low, ਢਿੱਲਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜੀ ਆ ਗਈ। But the moment I satsang message ਆਉਣੀ, I felt so happy that ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਹੋਏਗਾ, you may not be able to see me, but I will be physically present over there and look after the interests of my disciples. ਇਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ। I can keep on narrating you for hours together. There is no end to all this. As a matter of fact, I told you कि एक दफा मैं डोगरी सत्संग करना गया। मेरी आदत है घर च वैसे अंग्रेजी बोलते हैं, सब कुछ ज़्यादा अंग्रेजी घर चलती हैगी। सो मैं डोगरी सीखा, उत्थे गुरु जी के सत्संग कर, मैं सत्संग करना गया। गुरु जी मैंने कहते कि ना तू सत्संग कर रहा है? मैं कही यार संगत जी अगे बैठी है, तेरी अंग्रेजी समझ रहे हो? कहता तू अंग्रेजी बोल के सत्संग करके तू संगत नहीं स्वाद दे रहे, तू स्वाद आप ही ले रहे हैं। आई अंडरस्टूड। देर आफ्टर जब भी मैं सत्संग करना, वो आदत पै गई कभी इंग्लिश दे विच, कभी पंजाबी विच, कभी हिंदी दे विच। पहला तो मैं तो तकलीफ होती बिकॉज आई वाज़न्ट टू दिस सिस्टम। अच्छा फिर गुरु जी मैंने कहते होंगे सी जो सत्संग करता ना, शॉर्ट हमेशा कहते in short. See, when you do satsang, you have to see the peoples, are they receptive? When they are receptive, then your flow of your language and the words, it flows through. You are getting into that wake. पर गुरु जी मैंने कहते शॉर्ट। अच्छा फिर गुरु जी ने कहना शॉर्ट, फिर गुरु जी ने कहना आ भी दस। And I used to do it, all what he used to say.
ਉਹ जब आना बैठना कहता मैं तो तेन कैसे शॉर्ट तू फिर गुरु की गल नहीं मनी और फिर उन्होंने हंसना भी. So whenever I used to do satsang, one of the music director Rajinder Singh ਜਿਹੜਾ CD ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, invariably जब मैं खत्म करता सीगा, as my voice is going low, his music used to get louder. और you know which satsang he used to play every time? देखो जी मैं 150 सत्संग कहते हैं, औखी कड़ी ना देखण दे, औखी कड़ी ना देखण दे. आयास रजिंदर, मैं क्या यार तू वही दिन तेरे भुगतन शब्द कीर्तन मिला तू वही गल करनी है. कहंदा जी गुरु जी मैंने कहा सी कि जदों अंकल तू सत्संग करदे हैगे, you will play no other शब्द कीर्तन, you will only play this. How nice of him, how nice of him. And I would say उन्हीं की कृपा से सजे हैं. Otherwise, after retirement, nothing to do. An idle's mind, a diver's mind. शराब पी ली, कबाब खा ले, गोल्फ खेल लिया, पूरी दुनिया नू क्रिटिसाइज कर लिया, करके अपने कर्म ही खराब कर लिए. But ever since we came in touch with the Guru, he set us on a right path, so that our present difficulties दूर हो गई और फ्यूचर वास्ते भी इन्वेस्टमेंट, ताकि अगला जो जन्म होएगा ठीक होएगा जन्म. As a matter of fact, एक गाल दसा, एक दफा मैं की हो गया, you know, after my retirement, मैं थोड़ा फैट होने लगा, मोटा जा होने लग गया. As is, I'm still little fat. मैं कि मेरा I should not look fat. मैं 7 पठाने कुर्ते पजामे से सला दे. वो जब whenever I used to go to Guruji, I used to put on that. गुरुजी मैंने कहते ये की, मैं कह जी पठानी सलवार कमीज. कहते ठीक है तू समाई तो है पर पाना भी सिखला. हाँ देखे जी तू सलवार पाई हुई है, एक पौंचा उच्चा तो एक पौंचा नीवा. और हंस के कहते अंकल ये तेरी सलवार नहीं है, ये तो आज तो आंटी की सलवार पा के आया है. As a matter of fact, जब पहले गुरु शब्द कितने लगाने, he was very serious. After the langar, he would be so nice. He was so jovial and so nice. एक दफा की होया, you know this temple which Guruji has made, it has a spiritual blessings behind it. My son-in-law, he had come from outside, perfectly check-up करा करके सब कुछ, he went to Apollo hospital, friends से हम देख लिया, उन टेस्ट लिखते तो कहता मेरा सब कुछ ठीक है. कहता यार हम तब मेरे बॉस देख रहेगा. मैं हाँ blood test. After 2 days, the doctor rings up my son-in-law कि 10 तक कैंसर है. कहते कत्थों तेन कैंसर हो गया. कहता मैं तो ठीक है. I spoke to Dr. Pandav, वो भी गुरु का बड़ा भगत ऑफ द ऑल इंडिया एम्स. उन्होंने कहते टेस्ट करा देने हैं. So ultimately it was detected that he has got a thyroid cancer. मैं कि डॉक्टर पांडव कहना साडा सर्जन थायराइड ते छुट्टी थे, but today Shashi Bahl, he is from Sloan Keating's Cancer Research Institute from America. He happens to be in India today, right? कहते मैं तुसी मिल लो, वो तो दिल की तो ऑपरेशन कर देगा, since he is a visiting professor. जे ना कीता ठीक है, good enough. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤਾਂ didn't look like a surgeon, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, slightly bearded. I wasn't impressed by his personality. Anyone ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਪਈਆ 5 ਲੱਖ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੋ. No radiation, nothing, no chemotherapy. That's the thyroid has to be removed. Now it happened to be a day on which the banks were also closed. Bank ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ the bank draft ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ cash ਲਵਾਂਗੇ, we don't accept checks. In the meantime, Dr. Saab was asked to go to Bombay. ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ. Guruji ਨੇ ਮੈਨੂੰ flat ਦਿਲਵਾਇਆ ਸੀ ਸਤਬਾੜੀ, next to where Guruji's bada mandir is. So we used to stay there. In the evening, you had nothing to do. So every evening we used to go to Guruji's mandir. एक दिन Manoj Sood,
who's one of the members of the executive committee, ਕਹਿੰਦਾ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। When Guruji was in his physical form, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। This time Manoj Sood tells aunty, he said ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚਲੋ, ਥਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਚਪਾਤੀ whatever it is ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ and you bring the ਥਾਲੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। We went, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਕਰ। Then he tells me son ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਲਗਾ ਦਿਓ। So one thali held by my wife and two hands on either side touching it. Oh Guruji di photo de samne rakhte 10 minute hoya Sood aaya kehda ji hun tusi langar jao aur utthe thali langar sidho pa do and that has become entire langar has become a prasad. How nice. ਅਸੀਂ आके बैठ गए लंगर बैठे रहे and as a matter of fact jad langar kha ke nikle what do I see jad assi bahar aaye if you see between Guruji samadhi and the bada mandir Shiv ji di murti hai oh murti the eyes were moving the mouth was moving the neck was sorry left and right. We were shocked. My son asked my wife, Mama, this is what I'm saying. Am I seeing something right? My wife confirmed to him. He said, whatever you're seeing is 100% right. In the meantime, Sangat bhi aa gayi. Sara ne the video pe shots le li. This is on the internet. His eyes are opening. His mouth is shaking. And I happened to be on that day. Aim was that before the operation, Guruji ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ faith ਨਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। So my son-in-law ਠੀਕ ਹੈ but he didn't have that much of bhavna. He didn't have that much of faith. But on that day when he told my wife, today I believe that your Guru is God, and the operation therefore was very, very successful. He does a miracle to create a faith in his disciple. Our Guruji ji satsang logon tak karaunde is to tell the people, to convince them ki Rab hai or Rab can do everything. Us din jad main bahar baitha, I was sad. Main kaha Guruji, today is the day when I require your presence and you're not here. Kehde I get an intuitive feeling कि गुरुजी मैंने कहते तू बैठा की करे पौड़ी जाके पौड़ी गेट go and count the steps of the bada mandir. Now what is steps to do with my son's operation? मैं गया. As you get on to the bada mandir, there are 5 steps, and you know what the 5 steps mean. कि हर बंदा जो थोड़े कर्म खराब होते हैं ना, there are 5 things. Anger, ego, pride, lust, and greed. This was to tell you. Similarly, if you see your hand, there are 5 fingers. Similarly, if you see that most of the flowers have got 5 petals, is a constant reminder from the God Almighty. कि ये 5 कर्म है इन तुझे ठीक करो. Good enough. अंदर में गया मत्था टेकिया. Langar used to be in Guruji's mandir. Head up, utriya, there are 12 steps. And you know what the 12 steps said? I'm getting that feeling when I'm getting down. Mera mujh mein kuch nahi. Jo kuch hai, so tera hi tera. These are 12 words and the 12 steps. फिर जाके लंगर बैठा, 4 people एक थाली खाता. तेरा दिता खाना हैगा, तेरा दिता पीना है. लंगर छक लिया, थाली वापस करती, and then you climb up. You climb up. There are 9 steps, right? And the 9 steps also, they convey a certain meaning. I forgot now what that meaning was.
हाँ, 9 दरवाजे बंद करो, 9 दरवाजे बंद करो, 10वां दरवाजा खुल जाएगा। Now what are those 9 doors? आज जेड़े थोड़े 5 बुरे कर्म है, the entry to your body is through the nine doors. 2 अखां, 2 नक, 2 कन, 1 मुंह and 2 down below. 9 दरवाजे बंद करो, 10वां दरवाजा खुल जाएगा। And what is the 10वां दरवाजा? जो मांगे ठाकुर से सोही सोही होए। See, a mandir je baniya hai, see the spiritual blessings, even the stones convey the message at what a person should be, as to how your soul should behave. Remember, your flesh, blood is just temporary, it's transit. But what really remains, what is yours, I'm not the body, I am the soul. When one soul speaks to another soul through bhavna, jyot se mil jati hai, then there is no choice that the other soul is morally bound to help you out. आप पढ़ते हैं, wisdom मिलती है माँ बाप तो from the books. Let that not be a social entertainment, right? You have to. Guruji never said anything. He never gave any lectures. Remember that. Everything was conveyed by Guruji through his Shabd and Kirtan. And you would have noticed that when you're sitting at the hall with Guruji over there, he used to call Rajinder and tell him, stop the Shabd and put on the another Shabd Kirtan. Now that means if somebody's mind in which koi doubt ho gaya siga, to clear that doubt, the Shabd Kirtan was played against another person, so that his doubt was cleared. I have invariably seen Guruji मैंने कहते से उठे जाके सत्संग कर, उठे जाके सत्संग कर, उठे भी जाके सत्संग कर. And I used to tell Guruji, मैं क्या गुरुजी तुझे मैंने कार्ड दे नहीं उठे जाते हो. I don't know those people. कहते you don't have to know these people. You have to go there. Naturally, when you go to somebody's ब्याह बो वगैरह है, he gives you the langar. Naturally, तुसी सगन भी दोगे. So it came to my mind when you go to somebody else. शायद उन्हें पिछले जन्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਗਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ. ਹੁਣ ਅੱਜ ਆ ਕੇ मैं उन्हें पैसा दे रहे हैं, वो मैं उतार रहे हैं. I'm giving him back all that what was given to me. And good enough. I really enjoyed attending these weddings and these satsangs over and over again. Guruji कहते हैं गुड़गांव जा, हुन तो दिल्ली जा, हुन तो लुधियाना जा. As a matter of fact, once he had given us a card. हाँ, Guruji, I was with him for about few days. ते Guruji कहते तू कदों जा रहे हैं? मैं कही जैसा वो कल जा. And these are 10 cards, invitation cards. तो लोगों ने बढ़ती. Mr. So and so, a other address. मैं कह गुरुजी मैं करता जानता है, सेक्टर भी मैं जानता है, पर करते नंबर नहीं है. I don't remember his number. Guruji ने कार्ड देते ना, and he used to put the house number of the person also. He gave me 10 cards. और last card was Colonel Tour and family. कहते संभाल के लेके जाएंगे सारे कार्ड. So मैं कार्ड the dashboards पाते, and I went and distributed the cards. जिस दिन सत्संग सी जिथे जाना सी, गुरुजी was also present. ते हाँ, before that एक सत्संग होया से चंडीगढ़. कहते तू अंकल मैं आया सीगा ते तू क्यों नहीं आया सत्संग ते? तेन पता सी मैं सत्संग ते आ रहे हैं? मैं कहा जी पता सी. तू क्यों नहीं आया? मैं कहा गुरुजी कोई मैसेज नहीं आई, कोई चिट्ठी नहीं आई, कोई कार्ड नहीं आया. It does look nice. After जिन्हें सत्संग कहना, he is catered for certain people. So when he gave me these cards, मैं सारे बनते, and I kept my card in the dashboard of my car. जिस दिन सत्संग होने से मैं गया, मत्था टेके, कहना तू आज किस तरह आ गया? मैं कहा गुरुजी तुसी मैंने बुलाया सी. किस तरह तुम कदों बुलाया? मैं कहा गुरुजी तुसी मैनू 10 कार्ड दिते सीगे, 9 कार्ड सी मैं लोगों को बंटते. कहना हाँ तो सारे आ गए. ते 10वां कार्ड
मैं गुरु जी मैनू दिता सीगा, कहना जा अपना कार्ड दिखा। I went to my car, I opened the dashboard, the card was missing. The card was missing. I felt so ashamed. How to face Guruji? हंस के कहते देखिया फिर बिना कार्ड तो तू आ गया। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। See his ways of putting things across. It's wonderful. And as a matter of fact, Guruji na, he has his own sense of humor. Sometimes people used to come to him, or choti brass de garbi liyauni. Somebody thought it's a ritual, and choti garbi is a toy liyauna. Guruji कहते कि खेलने वास्ते थोड़ा है ਆਪਾਂ। Those type of things, you know. And what else? Now I must try to recapitulate. There's so many things, you know. There's so many things. Once Guruji, मेरी वाइफ कहती ਜਦੋਂ भी से गुरुजी को आਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤੀ ਦਾ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ से गुरु जी ਹੋਰ दिन रख लो, कि मत्था टेक लिया, प्रसाद खा लिया, जाओ चंडीगढ़ वापस, हुणे राती रात जाओ। एक दिन मेरी वाइफ मैनू कहती कमाल असीं नहीं दूरों आने हैगे, गुरु जी भेज वापस दिंदी है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी वेंट टू गुरु जी, एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 9 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, गुरु जी वोंट टेल अस टू गो बैक। मेरी वाइफ मैनू कहती गुरु जी अब तो वापस नहीं कर रहे। सो मैं गुरु जी पूछूं, मैं गुरु जी कल आ गया होए? कहता आंटी तो कहती सी कि सानू गुरु जी जिस तरह से वापस भेज देने हैं, हुण मैं रख लिया, हुण कदी तकलीफ। You know, he knew your mind so well. He knew your mind so well. I used to stay with my sister in Noida, or sometimes in the mess. Sardiyan din. I knew sometimes he used to leave you early, sometimes later. और उन्हीं धुंध पैंदी सी, सो असीं की कीता कार दे विच आई ऑलवेज यू टेक दैट पॉली फाइबर रजाइयां विच। एक दिन गुरु जी कहंदे हुण जाओ वापस। असीं ठीक है। उदों उसी दिन माई वाइफ अगे बैठी सी, गुरु जी कहंदे उठ पर्स चक ते पीछे बैठ। सो माई वाइफ एंड सेट पीछे आके बैठ गई। सो शी फेल्ट लिटिल बैड कि मैं तो गुरु जी को अगे बैठी सी, उन्होंने मैंने पीछे भेजता। जब असी जान लग गए तो वाइफ आस्क्ड मी, यू नो द वे? मैं कहा विल ट्राई इट। एक बंदा कब्बे बैठा सी, कहंदा जी मैं भी नोएडा जा रहा हैगा, तुसीं मेरे नाल चलो। सी ना गुरु जी गेव मी गाइड आल्सो, ही मेड मी, बिकॉज दैट मैन वाज सिटिंग बिहाइंड, सानू ओदे कोले बिठाता। असी चले गए जी नोएडा। He put me in the exact right road. All of a sudden, inni dhund aa gayi. I never knew. I opened my window. My wife, her daughter was there. And that's how we reached the house. Once Guruji gave us a car to go to Ludhiana and beyond, Jagaon. Me and another, my car and another 3 cars. Asi gaye, kathe gaye. रात दे जी 1 बज गए। लेडीज ने अपने हार हूर सब कांटे कोंटे कार छुपा ले कि वी वर गोइंग रात में होना सी चंडीगढ़। इन्नी धुंध फिर मैं और मेरे 3 फ्रेंड से जो गुरु संगत ही असं कारा खड़ी करने की जब सवेरे धुंध निकलेगी सी जामक। आफ्टर हाफ एन आवर अ जीप केम honk honk कर दी आई to attend कि वो पिछू आ रहा है। It was a pilot jeep of somebody. जिस तरह वो आई अगे तो वो खड़ी करके वो पुलिसमैन कहता कि फॉलो मी। पहला तो मैंने शक पै गया था कि लुटेरी ना भी जगह, लेकिन लेडीज लुट लिया। Anyway, since Guruji has sent here, he was taking care of her. ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। We crossed Ludhiana town. अगे जाके जगह जगह क्रॉस करके when the weather became absolutely clear early morning, the pilot jeep just disappeared because I wanted to stop and tell him thank you.
it just disappeared. गुरु जी कत्थों लियांदे है, किस तरह तुहानू गाइड करते हैं, इट्स अ मिस्ट्री. If you notice that तुसी गुरु जी को जांदे सी ना, sometimes तुहानू लंगर दे बाद उठा देना, किसी ने 2 बजे चकते वापस कर, किसी ने 1 बजे, किसी ने 3 बजे. Then I asked a particular man, मैं कहा समझ नहीं है गुरु दी जेडे चेले हैगे संगत है, they are all one, they are all alike. A guru has no favorites. कहते करण साहब मैं तो गुरु ना कई साल रह गया, I know him. मैं कहा फिर ये कि why this disparity, everybody wants to stay there. कहते नहीं, Guruji knows your soul. He says he's another, your soul should match the soul on the road of some Mahapurush who's already going in that area. When your soul, your frequency matches with the frequency of Mahapurush, he happens to be going on that road. So he has cleared your path for safety and security, and that you go to your home safe. कौन सोचता हैगा how Guruji looked after you, कि थोड़ा जाना भी he ensured. Now there are a few tips of life. The tips are that whenever you go from a place in a car to another place, just keep in your mind कि जेडी अगली गड्डी जा रही है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा गुरु बैठा है. जेडी अगली गड्डी जा रही है, एनी ट्रक, कोई ट्रक है या कार है या मोटरसाइकिल, whatever it is, just imagine that your Guruji is sitting in that and you are following him. वो जेडी थोड़ी जर्नी है, it's you're concentrating on the road, it is not wasted, your mind is on the right thought. यानी कि थोड़ी जर्नी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ कुछ, you have not lost anything, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ. Now, normally they're 24 hours, you go to your office for 8 hours, बाकी 16 घंटे रह गए. 16 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 8 घंटे ਸੌਂ ਲਏ. Okay, now when you're sleeping, keep on saying Hari Om, ya Vaheguru, Vaheguru. Don't think you 11 बज गए 12 बज के मैं सोना है. Because in the world of spirituality, there is no day, there is no night. Remember this, that just keep on saying Vaheguru, Vaheguru, Hari Om, Hari Om. So what happens when you fall off to sleep? Those vibrations of your prayers, they resonate throughout your body along with your blood. Your body is also blessed. ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਕੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਖੱਟ ਲਿਆ. See what a lovely investment it is. Could you ever imagine these things? Could you ever think of these things? ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ मैं की करा, मेरी किस्मत ही माड़ी. Right? Swami Vivekananda has very categorically put. He said, don't be fatalistic. जे मैं आज हैगा, जे position chair, my health, my finance is based on my previous actions of my previous journey. When your previous action means that कीड़े कूड़े मनियो, गाइयां मनियो, animals, that is not taken into account. Your previous jannam as a human being, whenever the evolutions of your soul took place in this planet or universe. So when you're born with certain, let us say 1,000 Hari-Oms. In that 1,000 Hari-Oms, you are supposed to, it is your spiritual balance. Like you have your finance balance in the bank, with that amount of money, you can buy something, and beyond that, you cannot buy. Similarly, you have a spiritual balance. In that spiritual balance, you will get your previous karma. Now, if you do 5 things wrong, or thoda jehda spiritual karma hai, spiritual
ohms, that will come down. Till today, you're on the safe line. But the moment your spiritual thing comes down, you can meet an accident. Because that spiritual count of yours, 1,000 or whatever it is, was keeping you safe. Now your spiritual bank has come down, you will have to face well. That is where the law of karma comes into play. The law of karma is very vital. The law of karma is an investment. आप कहने आप पैसा थे बैंक से आगे मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, what bloody property बढ़ेगी? Your property is of the soul. एडी इन्वेस्टमेंट करो, and that ये इन्वेस्टमेंट होगी, बाकी चीजें अपने आप ही आ जाती हैं. You go to the source. What is going to get you? You're going to get you, your finance, your health, your relationship. That is the source. You have to go to the source. You go to tap the source. To go to the source, you have to sacrifice. And as for the law of karma is, you don't have to think कि केड़ी चीज होती है. I have narrated you those 5 fingers, 5 steps. Anger, greed, lust, pride, and all those things. Keep those things with you. So whenever you're sending your income tax return every 3 months or 1 year, you're sending your income tax return. That is the moment when you must take a spiritual inspection of yourself. Ki मैं जन्म दे within 1 year, what good things I have done, what bad things I have done. Okay. And if you find that I have done some more bad things than the good things, then how do I equalize this now? How do I equalize whatever I lost? Time and tide waits for no man. Remember this. When you've lost something, make up. Make up your naam, your good deeds, your seva, your simran. Help others. And another thing I would like to tell you, never criticize anybody. चुगली नहीं करनी किसी दी. Why? कहते महात्मा संत की कदे नहीं चुगली करनी चाहिए. Between me and you, all of you somebody must be having 1,000 harioms. I may be having 800 harioms. You are superior to me soul-wise. Okay? So if I say something against you, I have got 180 harioms and you have got 100 harioms, you're superior soul-wise. So anything which I tell you, कि मेरी जड़ी भगती है जड़ी 50-60 है वो कट जाएगी और थोड़ी spiritual bank will go up. So if you were to say some problems, since my passive bhakti has come into your account, you have become safe. And मेरी भक्ति कट गई, मैंने जो कुछ होना भी नहीं सीखा, वो होएगा. Whether a chap is poor, whether he's a beggar, you don't know who is spiritually most sound. Who is more spiritually sound? Remember this. And when you go to somebody's house, कोई बीमार देखकर कहने जाने हो तो हौसला किए थोड़ा हौसला बढ़े हो तो बीमार. The more patient comes to a sick man, he feels that my last days have come. So when you go to somebody's house, make sure that you're adequately spiritually high, part puja karke. And when you go and see that person, mentally, from the forehead, apna hariom ekum, you must see those sparks going into hitting that poor man, that sick man. थोड़ी भगती है, दूसरे को भी दो. अपनी भगती अपने को ना रखो. कर भला हो भला. Have you got my point? हुन कई बार आप देखते कोई साधु आके बाहर बैठ जाता है. आपका कहना सारा CID का बंदा चोर है, must be thinking where to come. No. You never know he has come from a God sent from somewhere. He knows that there's trouble in this house. He's standing outside.
he's sending his spiritual waves, those vibrations into the house. वो अपनी भक्ति दे रहा है और थोनू भक्ति तुसी ले रहे हो, so that whatever problems you had, they are cured. They are safe. You know, in your spare times, or when you're walking on the road or sitting in a car, when I sit in my car, my wife was so many shock नहीं, मैं दुकाना तो खब्बे सजे दे रहा हूँ, जेडी चीज लेनी है, we do apologize to ladies go for shopping, window देख. But when you sit in the car, crowd hai, seek, find your guru. A guru never dies. Sometimes he is in physical form, sometimes in invisible form. So कोई भी जेड़ा बंदा जांदा you keep on saying कि शायद मेरा गुरु जा रहा है, मेरा गुरु जा रहा है. You understood? So your mind is also on the positive vibes. You have to keep your mind positively charged. Remember this. They are very, this life to begin with. Whatever I told you, it is very difficult to practice. But once you intentionally look into this deliberately for a period of 1 month, then it becomes a part of your system. क्योंकि हम लोग deliberately जब करते हैं ना, तो एक अपना मतलब कर रहे हैं. It's business. कि जे मैं करूँ मैं वहाँ मिलूँ. That's why we're doing these things. But when it becomes a part of your system, you are not asking for anything. गुरु जी कहते सी ना, मेरे तो मंगया ना करो, मैनू मन्या करो. So whatever I told you, if it becomes a part of your system, तुसी मांग नहीं रहे, तुसी मन रहे हो गुरु नु. The world of spirituality. See the flow which will be coming to you. Always remember that. गलती नाल भी किसी ने ये थोनू गुस्सा भी आंदा, don't. When there is, see थोड़े which रब all the time है, remember this. But the moment you get angry, वो रब थोड़े विचों निकल जाता है. That is why I say that when you're angry, it is a part of momentary insanity. तुसी रब में थोड़े कोले बैठे, तुसी रब नू कटना चाहते हो. जब रब निकल जाता है, और when you become anger, you don't know what you're doing. You may commit a suicide. You may do a murder. और दूसरी जी थोड़ी कमाई है, वो भी तुसी कट रहे हो. So remember, you don't have to shout. Don't get angry. वो बंदे ने तुसी समझाओ. Okay? Automatically those things will get in their place. और दूसरे दा हक तुसी नहीं मारना. What is somebody's, you don't have to मारो. और गुरु जी कहते सीगे, nothing is by chance. Everything is ordained. Not when I'm talking to my satsang, people who are watching or listening, there is a certain sense of purpose of the God Almighty. There may be certain doubts of your mind. You may be on the wrong track. Perhaps whatever I may tell you, it may appeal to you. And should you be going on a wrong track, perhaps you will rectify yourself. ताइयां तो गुरु जी कहते सी कि जब तुसी किसी नाल मिलदे हो, it is not by coincidence, by chance. There is a sense of purpose from the Almighty. Remember this. Okay? So these are there are many other things in life. Accept it. Don't go, अच्छा दूसरी गल, whenever something wrong happens to you, मेरे नाल क्यों? I am doing this, मेरे नाल क्यों? भी तेरे नाल ये है क्यों है कि the moment I have मेरे ठीक नहीं हुई है, my bad karmas are being polished. मेरी उन तो लाठी टूटनी हैगी. If I don't rectify myself, छोटे दुख तकलीफ नहीं होती, it can,
ज्यादा मैं spoil my karma, that maybe there's somebody in my family may die. It gives you a bit more shock. So that is why I say, tera pana meetha lage. Your will is sweet. Your will is sweet कि जी मैंने दुख तकलीफ हो रही है और मेरे बुरे कर्म खत्म हो रहे हैं. I am heading towards the silver lining. You get it? So very nice talking to you all. जगह जगह सत्संग करीदा है, and as a matter of fact, just सत्संग नहीं होंगे. When you're doing physical satsang, it has a different, gives you different pleasure. But look at science. Now you can see me. I can see you. I can feel the presence of the Almighty. And ਜਦੋਂ भी मैं सत्संग करदा, I'm being very honest with you, ऐ लगदा मेरे गुरु मेरे कोले बैठा मैं देख रहा. Right? And और जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ some people ask, why Guru? Why Guru? It's like this. Action and reaction are equal and opposite. Should you get a wrong thought? A thought is a rehearsal to an action. I repeat, a thought is a rehearsal to an action. So what Guruji does, he watches you like a gunman to ensure that if today I'm going to get 100 bad thoughts, he will guard me to ensure that I don't get 100 bad thoughts. I get only 5. Okay. So that is why where your guru comes, he has to set your course right. He is your teacher. And remember, a teacher, when the student is ready, a teacher appears. क्योंकि जब मैंने my son's problem होती, मैं अरदास कीती सी. At that time I never knew. गुरुजी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा ही तेरा. And how never heard nama आया सी मैं पंचकुला, never seen Guruji, never heard about him. I have gone through tough life of 25 years. जब मेजर सीगा, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल बना, फिर फुल कर्नल बना. Outwardly there was a sense of joy, but within there was some hurt which was hurting. On the eve of your life, when you're retired, nothing to look forward for. Financial khatam, health khatam, बच्चों दा ये पर उम्मीद हुंदी कि तुम देखेगा, वो भी khatam. That is the time Guruji appeared to me and took all my troubles away, so that whatever life we have is left. Next question which came to my mind is, if I had to go through this so much suffering, why didn't I meet Guruji? Why didn't he call me 25 years earlier? Remember? Why didn't he call me earlier if he wanted to help me out? I would again come to the law of karma. उदो मेरे कर्म खराब सीगे, हुण मैं पाठ पूजा वर्ल्ड स्पिरिचुअलिटी च आ गया, और जिहड़े मेरे बुरे कर्म सीगे वो घटते गए. जिस तरह मेरे बुरे कर्म घटते गए, मैं फाइनेंशियल भी ठीक हो गया, मेरी हेल्थ भी ठीक होगी, मेरे बेटे का कन भी ठीक हो गया. Mind you, seen that? These are the miracles. कहंदे सीगे गुरु जी तो कोई मंगीदा नहीं हुंदा, जे मंगोगे तो मिलदा नहीं कुछ. So when I first met Guruji and Guruji called me to press his legs, Chand, my wife told me, you must ask these 10 questions from your Guru. Right? जैसा मैं गुरुजी दी चरण दबाए, वो जे 10 questions मैं गुरुजी नूं पुछने सी और मंगने सीगे, वो आई नहीं दिमाग दे विच. They just disappeared. ये देखो गुरुजी से चमक है ना. गुरुजी कहते मैंने मन्या करो, मैं तो मंगे ना करो. जे मैं मंग लांदा उदों पहली दफा कि here's a golden opportunity, I would have lost everything which was to come to me. Understand? So Guru nu manya karo.
मंगना नहीं चाहिए। जो ठाकुर है सोई तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा ही तेरा। Now you talk when you go to a field. I'm a farmer also. थोड़ी कणक खड़ी हैगी, वो कणक is enjoying itself, वो मैं जद वो कणक सुकण लग जाती है, वो जी ऐ खड़ी है वो ऐ ड्रूप कर जाती है कि हूँ मैं तो है नहीं, कोई तेरा ही तेरा, तेरा ही तेरा। See how the law, the nature also tells you these things. So जब भी तुम कोई मिलती है चीज, शुक्र है मेरे रब, शुक्र है, शुक्र है। ये दुख तकलीफ लत टूटती भी है, शुक्र है मेरे रब, शुक्र है, बिकॉज तेरा पाना मीठा लगे, योर विल इज स्वीट। बिकॉज इन दिस प्रॉब्लम में गुरुजी मैंने कहने तू की बैठे सोचते रहना पौड़ी उनकी। When my son had to go through this thyroid cancer, he did believe in Guruji, but he never had faith. That bhavna wasn't in my son-in-law. Guruji created a miracle to convince him कि रब हैगा. That's why when he told my wife, today, Mama, I believe that your Guru is God. And next day when the operation took place, now what happened? डॉक्टर ने तो कहता ना 5 लाख जमा करा दो. Happened to one day when the banks are closed. Same evening, a friend of my wife, my daughter, comes to my home. Komal, I heard just you're going for an operation. Your husband को कहने से कहने मैंने ये नहीं पता तेनों कितने पैसे लगेंगे. आप 5 लाख पढ़, मेरे पास 5 लाख है. My wife says no. My daughter says no. Can I manage it? My daughter asked me. He said, should I accept those 5 lakhs? I said no. She started crying. He said, मैं पैसे लोड है, मैं को कर दूंगा. But why did you say no? Can I would return that money? मैं can remember that money which is being offered to you. Is it white or is it black? If it is a black, जो operation successful होना वो भी खत्म हो जाएगा. Have you understood? You will notice जिन्नियां बढ़िया marriages हुई हैं धूमधाम, most of the money which is used is black. जत्थे black money गई है, वो जिहड़ी marriage है, पहले 4-5 साल बड़ा खुश marriage अच्छी है, दौरी भी होगी, बड़े खुश है. But after 5 years, when the marriage is supposed to stabilize, it is becoming disturbed. It is becoming disturbed because the law of nature is taking its place. Have you understood? So, जिन्हें भी थोड़ी marriages होंदियां हैगा, जो खुशी दा जिहड़ी चीज है, don't put your black money into that. Did you notice जब गुरुजी किते जांदे होंदे सी, sometimes he just used to take a juice and खाना नहीं खाते सी. So I asked somebody very बुजुर्ग, मैं कहा जी चंगा लगदा वो गुरुजी went to his house and गुरुजी ने पानी पूनी पीता, nothing beyond it. कहना I can't say, शायद वो जे भोजन बने शायद black होना चाहिए. Soul has to be pure. The तकलीफ बड़ी होंदी when just whatever मैं तुम दस to begin with. You know, when there is change, whenever your body wants to change, there will be rebellion with you. जिथे रब भी बैठा हुआ था, उत्थे सारे भूत प्रेत भी बैठे हैं. भूत प्रेत will show that you do not. Now, if हम तुझे आप गुरु जी के बारे गल कर रहे हैं ना, right? When you talk amongst your friends, your dear friends, they will come out. यार तुझे केड़ी चक्रां च पिए होंगे? Why are you in this? This evil spirit is trying to spoil your mind. That is the place where you go to watch. Don't criticize that person who's telling you this, because yes, you don't know spiritually his bank balance may be more than yours. Keep quiet. Keep everything to yourself.
मेरी वाइफ दी मासी पिंड च रहिंदी हैगी 10 साल हो गए मंजे ते बैठे चक्या नहीं जाता उठते नहीं पे दिने गोडे दुखते है अल्टीमेटली द डॉटर्स केम टू मी एंड माय वाइफ वो कहंदी मेरी थोड़ी मासी दा हाल है सो वी टुक हर दे डॉट मासी दी बेटी टू गुरु जी कहंदे थोड़ी मां है ना जेड़ी वो चुगलियां करदी है कोई बीमारी नहीं वो बीमारी चुगलियां दी है वो जो चुगली कर रही है वो अपने कर्म खराब कर रही है वो कर्म खराब में जो चीज ठीक भी होनी ठीक भी नहीं होनी गुरु जी कहते वो मां को चुगलियां बंद और गोडे का कल्याण The girls went back to the village. मासी को गई कहते गुरु जी का हुक्म ते कहती हाँ मैं चुगलियां कि बैठी बैठी वो करा की मैं बैठी बैठी करा की मैं किसी घर भी नहीं जा सकती हुण आ जांदी दोस्तां गल्लां कोल होर की करिए उन्हें चुगली जी 2 महीने बंद तीजे महीने ਉਹਦੇ गोडे ठीक हो गए है उन्हें कोई घर नहीं छड़े जिहदे घर ना गई हो Can you believe it? She is making up for the 10-12 years which she is also not visiting people's houses. ਹੁਣ जाके 50 रुपए के 100 रुपए कहते तेरे मुंडे कुड़ी ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਆ ਲੈ ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦੇ ਆ ਸਗਨ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਗਨ ਲੈ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਆਹੋ ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਅਪ दैट ठीक हो गई कि ना 100% फिट कर आ गई आदत जानती तो नहीं ना हैबिट्स डोंट डाई वो फिर चुगली करने लगी वो गोडे फिर जा I mean it is the you know seeing is believing वो कुड़ियां ने और सारे पिंड ने अपने आप ही अपने सामने चीजें देख लिया ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ you get it now see those girls had to come to Guruji take a lesson ki chugli band kar tusi ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ now that message was conveyed to the other ladies of the village ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ see the way of Guruji's message you learn from the others' mistakes and संगत हर ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਫੁੱਲ ਮੂਨ ਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸਾਡੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ right now that is a reminder from the natures कि तुसी पाठ पूजा करो a moon which is down a moon also rises गुरु मत्था टेकदा जेडी समुद्र दियां waves हैगियां they also want to get to closer to the almighty they also rise you feel very happy when the full moon is there but light hai you can see the flowers and whatnot and those insects which cannot see during the dark they also feel happy on moonlit night they can also move about freely nature has taught us a lot of things your body do you know your heart is working you don't know but it is on ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ and every person ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਜਦ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ right because ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈਗਾ the moment he dies his life is gone ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਸੀਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ نو ਉਹ ਬੁੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੁੜਾ ਹੈ no we take it if somebody calls me Buddha means I'm a gone case okay? But the word Buddha comes from buddhi so if somebody calls me Buddha
I should feel happy because he's telling me that I am a man of wisdom. Have you got it? उन्हें अपनी तरफ से satisfy करके कुछ nonsense कुछ है नहीं तो बड़ा हो गया. I must feel happy that he's giving me a compliment to me, that I'm a wise man, I'm a man of wisdom. So please pass this message to everybody, because as you grow old in life, you become more emotional, you become more sensitive, you feel bad कि मैं तो अपने बच्चे ने भी पालिया, मैं अपने मुंडे ने पर आज मैंने कहता तू बुढ़ा है. Okay, so one has to learn lot in life. So whenever I get the time again, I will recapitulate a lot of things. I'm sure after a year or so, I'll get back to you. Let me recapitulate so many things what Guruji has taught me. He's taught me so many things. उन जिंदगी का पहला टाइम में से yes sir said boss yes sir 3 bags full, and now a stage come when the life has started to enjoy in the right earnest. खुशी इतना जब गुरु से मिलने बाद उदो ही हुई है. Sorry, another one. Guruji used to stay in General Ahuja's house, sector 2, ਅਸੀਂ 4 ਸੀ. ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਇਓ, ਤੁਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਆਇਓ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ. ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ yes, Guruji is taking us to Tiwana's house in Patiala. He was ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ, must be 150 cars, ਅੱਗੇ ਪਾਇਲਟ ਜੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਗਤ. ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ ਅਸੀਂ. First time I've seen कोई खड़ी रेड लाइट ही अपने आप ग्रीन हो रही है. No pilot never bypassed red light. वो अपने आप ही ग्रीन हो रही है. As we about to approach Patiala, about 15 kilometers short, मेरी पुरानी गड्डी सी, the clutch was giving trouble. Every car is overtaking me. It happened to be New Year Day. मेरी वाइफ कहती तू मैनू न्यू ईयर तक ढाबे च रोटी खिलाएगा. मैं कहा कोई ना, की करना, ऐसे भी पला होने से बहुत पला ढाबे तो खाएंगे. तो बैठे slowly my was the last car. अगे मैं गुरु जी पूरा कॉन्वॉय खड़ा देखा, वो बाद च मैनू पता लगा, कहते गुरु जी कॉर्नर पूरे गड्डियां खड़ियां कर लिया सी, कहते तूर अंकल की गड्डी पिछे खराब है, जदों आएगी फिर आप चल पावांगे. What my message to you is, Guru will never leave you alone. Remember, Guru mere sang har naale. Guru mere sang har naale. He has lived up to his words. It's not that he's saying, मुंह तो बोलना, Guru mere sang har naale. So, जैसे चीजें I'm talking to you, say Guruji कहने हम in short, और फिर Guruji दस ना भी दस. So it is that, and very nice talking to the satsang. As a matter of fact, people have asked me to come over to the countries and you talk over. So मैं कह जब गुरुजी हुक्म में देंगे, on that day I'll catch the flight to wherever I'm called. And whenever I go, I don't want anybody to pay for my fare. I will pay for my own fare. क्यों मैंने बहुत कुछ देता रब ने, छप्पड़ फाड़ के देता है. Remember this. Guruji's message is, we have come here not to take. We have come the best to give. देना सीखो, देना सीखो. Have pleasure in giving. Don't have pleasure in receiving. जे थोनों किसी ने 1000 रुपए की गिफ्ट भी भेजती दिवाली ते, make sure the first opportunity जे तुम 1000 रुपए बैंक दे विच रख दे तो जो इंटरेस्ट आउंदा सीगा, so when you return the gift to the person in one way or the other, the gift must carry the interest also. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੋ,
If you have 2 members of family going and having a langar, यानी कि तुम 10 रुपए चढ़ाते थे 100 रुपए तो लंगर खा लिया. No, don't do that. You know that you're going to have langar. The dal bhi hai, sabji bhi hai, pulka bhi hai, kadha hai, kheer bhi hai. On your mental level, you should know कि कितना खर्च होना है. मान लीजिए एक खर्च है थोड़ा कि मेरा 50 रुपए खर्च है टोटल, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਦੋ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਕੋਈ ਕਚਹਿਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿੱਚ. If you notice those people who has been attending Guruji satsang, Guruji made sure that the moment your journey started from the house, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, the moment you go back to your house, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ 10ਵਾਂ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਘੰਟੇ 40 ਮਿੰਟ. ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ. ਓਕੇ, ਕੀਪ ਦਿਸ ਇਨ ਮਾਈਂਡ. ਦਸੌਂਦ ਜਿਨ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦਸੌਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ. ਸੋ that must be done. That must be done. The earlier you do, the habit that you get, and when you go back, recapitulate your past. कि मैं किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी का मैं हक तो नहीं मारा, किसी ने मैं क्रिटिसाइज नहीं की थी, मैं तो आई हैव लॉस्ट, मेरी खुद ही कमाई पिछले जानती मैं खुद ही गवा बैठा, खुद ही तुम गवा बैठे हो. Then why do you say कि मेरे नाल क्यों? We are the culprits, we are the doers. That is why the God has given you the sweet will. He has given you the will of freedom, so that अपने आप से we have to set our ways right. The earlier we do, the better is to our advantage, because we don't know how many years to live. Remember, every day you're coming closer. And always also remember, if you are born that you are going to live for 70 years. At 70 years, थोड़े कोड़े हजे भी नहीं थोड़े बुरे कर्म हैगे, and you are praying. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਠੀਕ ਕਰਿਓ. Guruji gives you another 5 years. कि वो जो थोड़े बुरे कर्म बचते हैं, he has given you time to set those karmas also right, so that when you go and die, you are going on a clean slate. Guru also gives long life when he knows that you're progressing. Don't you know this when you're in the school? A student is good attendance, passing marks are 40, but he's very good attentive. Unu mil jande 35. Then the teacher goes and tells the paper, can they say passing marks 40, man, take 30, but his conduct is good. Principal say his conduct is good, give 40 marks and pass him. Similarly is your guru. If your life is 70 years and you have been progressing well, he knows कि थोड़ा जितना और जिंदगी मिल गई, जो थोड़ा बुरे कर्म बचते हैंगे, and you are on the right path, he gives you more extension of life, so that when you die, your balance bad karma bilkul khatam, and you're on silver lining. When you're on the silver lining, thoda jada agla janam hai, if you're going to be a human being and take a janam in human birth, you'll go to a nice home. You'll go to a nice home. Or if you have to go through 84 lakh June, then you may not have to go through 84 lakh. You may have to go only 20 lakh June. And then you take the birth of a human. बुरे बुरे मैंने सपने आ रहे हैं, मैंने समझ जाने दुनिया कहते सत्संग करया करो, सत्संग जाया करो, things will be set right. सुनो दे कहता पर हुआ है कुछ नहीं. Then Guru Arjan Dev Ji one day took him. He came to a village. This Maharaja had the same dream, same village, same hut which he saw in his dream. वही Guru Arjan Dev ने उन्होंने दिखा दी. Guru Arjan Dev told him that had you not done satsang, your next janam was to be like this. So the fact that you got this dream, your satsang has set you right. Jinna tusi satsang attend karonge, all these things which you took actually come physically, it has tortured your sleep mentally, because you have been going for satsang. So satsang apan jante hain, it is, we don't know, but it edich aapala hega. He just, Guru कहते सी,
He said, when you dream about me, I'm there. I am there. So if you pray, do the things right, Guru apni bhavnan karo, he's there, but then you will be able to see him in your dreams. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ satsang ਹੁੰਦੇ ਹੈ, from the walls, from the photographs, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ. This is to show his presence to those people ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ. He tells you like आज ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, AC ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, then where is the question of these drops falling? He is showing his presence. When my son-in-law, as I told you, had to go for an operation, he never believed Guru hai, but Guruji showed a miracle just to bring his faith. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? So that ਤੁਹਾਡਾ faith ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵਨਾ ਚ ਆ ਜਾਏ. So when it gets into that, then your word spirituality, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, without you knowing, सब ठीक हो जाते हैं. Okay? I would say that उन्हों की कृपा से सचे हैं हम. जिंदगी बहुत नशे सीखे, सारे नशे छड़ते, एक कोई नशा रह गया, गुरु दी चरना दी मौज, यही नशा. And in the end I would say, if there's any heaven on this earth, it's but here. Jai Guru Ji.